learn, and then, remember so many subjects. Okay, so I'm sharing my screen. Now, is it visible, everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So input devices we have covered. So today we'll start with output devices. So output device is, some device which, or you can say a system or a piece of instruments or computer hardware that retrieves data from the computer system and then translates this received data into the form which is understandable to the user or to the human being, whoever is operating. Now, the most common human understandable form typically includes text, visual, or audio, or a hard copy, or a printed paper. तो जो आउटपुट डिवाइस है उससे हम क्या समझते हैं कि कोई इस तरह का इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट या सेट ऑफ इक्विपमेंट जिससे कि हमें जो हम काम करवाना चाहते हैं कंप्यूटर से वो आउटपुट जो है वो रिजल्ट जो है वो हमको वो दे। तो अब हम किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन चाहते हैं उससे या किस तरह से हम चाहते हैं कि वो डेटा प्रोसेस करे, तो वो हम देखें तो वो या तो टेक्स्ट के फॉर्म में होता है या फिर कोई पिक्चर के फॉर्म में होता है, वीडियो के फॉर्म में होता है या ऑडियो के फॉर्म में होता है या कुछ प्रिंटेड मटेरियल हम निकालना चाहते हैं, कोई कॉपी करना चाहते हैं कंप्यूटर में जो भी हमारी फाइल्स डॉक्यूमेंट्स हैं उसको। तो इतने तरह से हम चीज़ों को लेते हैं कंप्यूटर से। तो जो आउटपुट यूनिट है या आउटपुट डिवाइस है वो एक तरह से कहना चाहिए कि आपके नीड के ऊपर, आपके किस तरह से आप चाहते हो, कैसी आपकी ज़रूरत है, उस हिसाब से आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, और उसी तरह से आप उस आउटपुट डिवाइस को एक कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करते हो। सो आउटपुट डिवाइसेस एंड यूनिट्स बोथ आर मोर और लेस सेम, and we use these two terms to get, to understand what the output device or a unit means, and it is used by the different people in different ways depending upon their need. So they are also termed as peripheral devices. Input and output both devices. There are some devices which we call peripheral devices or auxiliary devices because they are not the inherent part of a computer system. You can connect these devices externally, to process the data or to give the input to the device, or you want, the output from the device in a certain manner. So that's why they are called the peripheral devices or auxiliary devices. Now, what are the examples of output devices? So several types of output devices are available and that help in obtaining output from the computer. And each device has its own function, merits and demerits. तो जो आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस हैं वो कुछ तो सिस्टम में ही बनी हुई आती हैं, जैसे कि आपके पास लैपटॉप है तो एक डिस्प्ले यूनिट आएगा, एक कीबोर्ड आएगा, टच स्क्रीन है या जो भी है। लेकिन कई बार आपको इनपुट किसी दूसरे तरीके से आप उसको देना चाहते हो, स्कैनर के थ्रू देना चाहते हो या फिर कोई ऑडियो वीडियो उसमें तरह से देना चाहते हो, तो उस केस में आपको एक्सटर्नली इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस जो है वो कनेक्ट करने पड़ते हैं। जैसे कि प्रिंटर है, प्रिंटर किसी भी कंप्यूटर का पार्ट नहीं होता है, उसको आपको बाहर से कनेक्ट करना पड़ता है। तो जो चीज़ें हम बाहर से कनेक्ट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इनपुट डिवाइस में आप जॉयस्टिक को मान लो या फिर आउटपुट डिवाइस में आप प्रिंटर को मान लो, स्कैनर को मान लो, प्लॉटर को मान लो, बहुत सारी चीज़ें। तो आप अपना जो आउटपुट है वो किस फॉर्म में लेना चाहते हो उस तरह से आप उस डिवाइस को कनेक्ट करते हो, इसलिए इसको कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस या ऑक्सिलरी डिवाइसेस। और सब डिवाइसेस के अपने फायदे हैं और जो कॉमनली यूज्ड कहना चाहिए कि आउटपुट डिवाइसेस हैं वो इस तरह से हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर।
Monitor, it may be monitor, it may be printer, speaker, headphone, projectors, touch screen, plotters and GPS unit. तो किसी भी तरह से जो है आपको जिस फॉर्म में चाहिए, जो डेटा आपको चाहिए, उस हिसाब से आप आउटपुट डिवाइस को से ले सकते हो। अब यहाँ पर हम पहले ये देख लेते हैं मॉनिटर्स। तो जो फर्स्ट जो आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर्स में होता है, इनबिल्ट होता है, वो है मॉनिटर्स। कई बार लैपटॉप को एक बड़ी स्क्रीन से भी कनेक्ट करते हैं जब आप प्रोजेक्टर्स यूज करते हो या बहुत ज़्यादा व्यूअर्स या आपका कॉन्फ्रेंस है या ऐसा कुछ है, तो बड़ी स्क्रीन पे भी यू हैव टू display the content of your file or a document. So in that case वो large जो स्क्रीन पे आप डालोगे तो प्रोजेक्टर्स आप यूज करते हो उस केस में। लेकिन जो मॉनिटर है वो हर कंप्यूटर का एक इनहेरेंट पार्ट है। जैसे कि आपका मोबाइल फोन है, उसमें भी एक डिस्प्ले स्क्रीन होती है, आईपैड है या पाम टॉप है, जो भी हो, एक डिस्प्ले स्क्रीन उसमें होती ही होती है। उसको आप किसी और से कनेक्ट करके उसका प्रोजेक्शन बड़ा कर सकते हो। तो मॉनिटर यानी कि डिस्प्ले यूनिट। तो डिस्प्ले यूनिट्स जो हैं वो बहुत तरह की हैं, मॉनिटर्स या इसको हम डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। तो अर्लियर डेज में वी हैड CRT बेस्ड डिस्प्ले सिस्टम और मॉनिटर्स। CRT इज कैथोड रे ट्यूब। एक इस तरह का ऐसा ट्यूब होता है। नाउ दिस ट्यूब इज नॉट अ फ्लैट टाइप ना, एक कर्व होता है उसमें, और पीछे से जो है एक ट्यूब होता है, वैक्यूम ट्यूब कह लो इसको, और वहां से कैथोड जो रेज हैं वो बम्बार्ड होती हैं स्क्रीन के ऊपर और फिर इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले होती है। तो ये एक तरह से बहुत हाई वोल्टेज पॉइंट भी होता है उसमें। और जो स्क्रीन है इसी में पहले तो ब्लैक एंड वाइट मोनोक्रोम डिस्प्लेज होते थे, बाद में फिर कलर्ड यूनिट्स आई। तो इसके बारे में बस इतना ही जानना आपको काफी है, क्योंकि बहुत टेक्निकली हमको उसके अंदर नहीं जाना है। और नाउ अ डेज दे आर हार्डली यूज। आई डोंट थिंक कि द CRT, क्योंकि ये कंप्यूटर्स में भी और टीवी स्क्रीन्स भी ऐसी ही आती थी पहले के समय में। अर्लियर द टीवी स्क्रीन्स आर ऑल्सो CRT बेस्ड। डिस्प्ले यूनिट उनकी सेम फंक्शन पे काम करती थी। Nowadays, we have LCD and LED and plasma displays. They all are flat screen panels और monitors. ये flat screen होती हैं, इसके अपने अपने जो है कहना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स हैं, उसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। बस ये आपको पता होना चाहिए, फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। CRT मीन्स कैथोड रे ट्यूब, LCD मीन्स लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED मीन्स लाइट एमिटिंग डायोड, प्लाज्मा वो प्लाज्मा डिस्प्ले है। इसमें एक प्लाज्मा जो है वो जो कहना चाहिए चार्ज मटेरियल का, वो स्क्रीन के पीछे होता है, और जिस तरह से सिग्नल जाता है उस तरह से जो है ये चार्ज होते हैं और इल्यूमिनेट होते हैं। और लाइट एमिटिंग डायोड्स में छोटे छोटे डायोड्स होते हैं जो कि सिग्नल के हिसाब से एमिट करते हैं लाइट। LEDs तो आजकल हर जगह, चाहे आपके बल्ब हो या कहना चाहिए डेकोरेटिव लाइटिंग हो, हर जगह LED ही यूज होता है। तो इस तरह से जो है these three are flat screen type of display units. इसमें इन्होंने थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है। सो लेट्स सी CRT और एंड फ्लैट टाइप। सो ऑल दीज थिंग जो मॉनिटर्स हैं, वी कॉल इट VDUs, विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स। ऑलराइट, VDU the full form is visual display unit. So they contain so many components, so many circuitry and screen and power supplies and so many buttons inside. So and all those things are encased into a single box or a single casing, and the monitor which provides the output from the computer on a screen so that the user can view the data easily.
Now, the second one is printer. Printer is another most common example of output device, and it can be easily found in home also and workplaces. So there is must to have. And the primary function of the printer is to make a copy. Whatever content is there in a computer, it just give the prints that material, whether it is a image or a graphic or a text, anything. So that we call hard copy or Xerox copy. Xerox is not the right word because it is the technique or a name of the person who earlier invented this machine, Xerox machine. So it is just you can get the hard copy from the printer. And touch screen are output devices as well as input devices, as we have seen earlier. So these are also a form of a display unit, and you can use in portable devices also. And it is a thin lightweight developed to receive the output from the computer, because the screen is touch sensitive areas and elements which senses the touch of your finger, and accordingly the signal is transmitted to your CPU ki what type of function you want from the computer to process. And they can display visuals and graphics also. So in laptops, smartphones and tablets, everywhere you'll get this type of screen, and we are using it in various form of devices. तो टच स्क्रीन से भी आप क्या कर सकते हो, इनपुट भी दे सकते हो, आउटपुट भी दे सकते हो. ये भी एक डिस्प्ले यूनिट का एक पार्ट है जिसमें कि आप टच करते हो अपने फिंगर से, तो कंप्यूटर को जो सिग्नल है वो जाता है कि सीपीयू तक कि आप किस तरह का फंक्शन जानना चाह रहे हो. आप वेदर रिपोर्ट जानना चाह रहे हो, आप किसी पर्टिकुलर साइट पे जाना चाह रहे हो, या कुछ और करना चाह रहे हो, तो वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन जो है वो सीपीयू को आती है, अकॉर्डिंगली वो प्रोसेस करता है, और जो उसी स्क्रीन के ऊपर आपको जो है वो डिस्प्ले भी मिल जाता है, आउटपुट भी आपको मिल जाता है. प्रोजेक्टर्स जो हैं वो भी एक डिस्प्ले यूनिट का ही पार्ट हैं, क्योंकि जो इमेजेस इसको मिलती हैं फ्रॉम द कंप्यूटर, इट ट्रांसफर्स दोज कंप्यूटर इमेजेस टू द वॉल. तो वो वॉल पे प्रोजेक्ट कर देता है. वॉल या फिर बहुत लार्ज कोई स्क्रीन है, या क्लॉथ है, या मटेरियल है, या जो भी चीजें हैं, तो उस पे जो है वो प्रोजेक्शन आप आराम से इससे कर सकते हो. तो द कंप्यूटर फर्स्ट सेंड्स द सिग्नल टू द वीडियो कार्ड and then transmits the signal to the projector to project that particular image on that surface. And speakers are also one of the most common output device which we use in our daily routine to hear some audio output from the computer or from the mobile phone or a laptop. And computer speakers usually receive signal from the sound card. There is a sound card in your system, and it converts those signals into audio signals. And they are having some internal amplifiers which actually vibrates at different frequencies. You can increase the volume or decrease the volume, or you can say the amplitude of the sound as per the choice of the user. So accordingly these amplifier amplifies, or the audio signals or audio the sound of those signals. And then there are sound cards. Sound cards are nothing but the expansion cards. It's a type of output device because it is installed on the motherboard in the inner case of computer, and the main function is to control the output of the sound signal, speakers or headphones, just to control the volume of the signal. तो जो स्पीकर और साउंड कार्ड हैं वो भी क्या करते हैं कि जो सिग्नल है, जो सिग्नल जिस भी फॉर्म में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, वो उसको वो ऑडियो फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फ्रीक्वेंसीज को ऑडियो
फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट करते हैं और वो चीज आप सुन सकते हो। तो उसमें आप अपना वॉल्यूम जो है वो किस वॉल्यूम पे आप सुनना चाहते हो उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। तो उसके लिए एक साउंड कार्ड जो है वो सिस्टम में होता है। उसी तरह से हेडफोन है, हेडफोन भी इज अनदर फॉर्म ऑफ योर स्पीकर, and this allows to listen the audio from the computer. Only it is restricted to your ears, not everyone can hear, just you can hear. So these devices are privately you can hear whatever you want to without disturbing others who are surrounded by surrounded around you. So headphones come in a variety of sizes, variety of designs according to the manufacturers. So they can be wired or wireless, both forms. And then there is a video card. Video card is again it's a basic requirement. So most of the computers with regular video graphics capabilities to display the images or videos on the screens. However, to get the more detailed graphics or very minute things to be, projected in a nice manner, in a very uh, fine details can be projected very nicely. So for that, you have to have higher video card. So that's why most gaming computers and laptops use additional video cards in the motherboard. And then there is a GPS unit, that is the Global Positioning System. GPS is now a familiar word because you can track your vehicle or your mobile through this system. If this chip is there in your vehicle or in a laptop or in your mobile, you can track that gadget, whether it is with you or it is somewhere else, so you can find it. Now, this is a radio-based navigation system consisting of a network of multiple satellites in the orbit around you can say uh, 20 30 kilometers away from our Earth's surface. So this type of satellites, they are connected, continuous signal, they receive from your system or that GPS chip to the satellite, so they can track you because you are having that gadget, or if you are not having that mobile or a laptop, they can track that mobile and um, laptop as well. So it uses a system of about 31 satellites. 31 satellites is required to track a single subject in space. Okay, satellites are in space, and they provide the accurate result. For accurate result, you need 31 satellites, and they use microwave signals with the GPS device. Now, then there is a braille reader. Braille reader is something which helps blind people to read the content because they cannot see. So visually there is no need, but to read the content, or they can give input to the computer to get the particular output. So for that, there are braille reader, because the computer sends signals to the braille reader, and this braille reader converts into braille letters, some form of projections on a flat surface in the form of pen or some embossed thing on a flat screen. So they blind people just touch that screen and read or understand whatever is written, or the information they can get from the computer. Now then there is a speech generating device. Nowadays it is common in your laptop and your mobile also. Speech generating device are output devices that help to generate voice output from the text. If some text is displayed and you want someone to read it, then this speech generating device does this function. So speech generating device are also known as speech synthesizer or voice output communication aids. And these output devices are widely used in telephone exchange also.
फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लाइंड एंड म्यूट पीपल, उनके लिए भी काम में आता है। तो ब्रेल रीडर और एसजीडी जो है ये भी आउटपुट डिवाइसेस हैं। ब्रेल रीडर में क्या होता है कि एक फ्लैट स्क्रीन होता है, सरफेस होता है, क्योंकि वो टच ही कर सकते हैं, देखने का तो है नहीं, ब्लाइंड है। तो इंफॉर्मेशन वो किस तरह से काम करें कंप्यूटर पे, और किस तरह से जो चीज़ें उनको मिल रही हैं वो किस तरह से उसको समझें और लें, तो उसके लिए ब्रेल रीडर होता है। तो ब्रेल से वो इनपुट देते हैं और वो ब्रेल से ही जो है, जो सिग्नल है, जो भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए, वो जो सिग्नल्स हैं वो ब्रेल रीडर पे जाता है, और ब्रेल रीडर जो है उस सिग्नल को कन्वर्ट करता है कुछ मैकेनिकल फॉर्म में, जो क्योंकि कुछ पिन्स होते हैं फ्लैट स्क्रीन के ऊपर जो कि ऊपर आएंगे तो वो टच करके इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। उनके कुछ अपने अलग उनका टेक्स्ट होता है, स्क्रिप्ट होती है उनकी अलग, कि वो किस फॉर्म में क्या चीजें समझते हैं। तो अकॉर्डिंगली इस तरह से जो है सिग्नल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और स्पीच जनरेटिंग डिवाइसेस भी हैं। यदि कुछ ब्लाइंड लोग हैं या जो सुन तो सकते हैं लेकिन क्या कहना चाहिए कि देख नहीं सकते हैं, या फिर जो गूंगे हैं, बोल नहीं सकते लेकिन सुन सकते हैं, तो कुछ इस तरह के टेक्स्ट हैं आपके पास, तो कुछ ऐसी डिवाइस होती हैं जो कि वो रीड करके बता सकती हैं कि हाँ ये चीजें हैं। तो वो जनरेटिंग डिवाइसेस भी हैं जो आउटपुट डिवाइस की तरह हम उसको कहेंगे। फिर प्लॉटर्स होते हैं। तो प्लॉटर्स आर ऑल्सो सम आउटपुट डिवाइसेस दैट आर आइडेंटिकल टू प्रिंटर, बट you can say the advanced version or a large version of a simple printer, because printer has its own like limitation. Up to certain size of paper you can print, but and also the text. Now if there are very particular graphics or a design, or something very, you can say, high definition type, where the information is very small information is also taken into account. So in that case, or depending upon the need, there are large plotters, so they make such printing type. So it is primarily used to print vector graphics. Vector graphics means three-dimensional or more elaborate type of printing, you can say, which is of very high quality. So unlike printer, plotter have a very advanced features and can also print on a cardboard. And also it's not necessary ki this all thing will be printed on a paper, no, or a spatial paper. They print on a cardboard or a film or a fabric or some synthetic surfaces as well. So these are the plotters. Now we have completed till here input devices and output devices. Now between input and output devices, अच्छा इसको मैंने हिंदी में नहीं बोला शायद, प्लॉटर्स जो होते हैं वो भी आउटपुट डिवाइसेस हैं। और प्रिंटर क्या करता है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है या फाइल है या कोई भी आप इंफॉर्मेशन चाहते हो वो प्रिंट करता है पेपर के ऊपर। अब उस पेपर पे एक सिंपल प्रिंटिंग होती है, कलर प्रिंटर भी हो सकता है, ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकता है, जैसी आपकी नीड है, छोटे छोटे से पिक्चर्स और वो सब भी आप प्रिंट कर सकते हो। लेकिन कई जगहों पे जब लार्ज बैनर्स आप देखते हो, बड़े बड़े जो लगे होते हैं, या फिर बहुत ही कहना चाहिए कि जब कुछ एग्जीबिशन हो या कुछ इस तरह के होते हैं, तो या फिर फैब्रिक के ऊपर आपको कुछ ग्राफिक प्रिंट करना हो, तो आजकल पहले तो मशीन्स होती थी जिसमें कि वो सब किया जाता था। आजकल बहुत ही अच्छे फाइन तरीके से आप ये सब चीजें जो हैं कंप्यूटर के थ्रू बड़ी बड़ी स्क्रीन पे या फैब्रिक पे या कोई थिन फिल्म हो या कोई सिंथेटिक मटेरियल हो या सरफेस हो या कार्डबोर्ड हो, उस पे भी प्रिंट कर सकते हो। और उसके जो ग्राफिक्स हैं वो बहुत हाई क्वालिटी के, हाई डेफिनेशन के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका प्लॉटर जो है वो कितना एफिशिएंट है उस काम को करने के लिए। तो इस तरह से जो है प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है।
अब इन दोनों के बीच में, इनपुट और आउटपुट के बीच में जो सेंट्रल यूनिट आती है वो होती है सीपीयू, दैट इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इसका नाम ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है. नाउ दिस इज द मेन यूनिट, द मेन फंक्शनल यूनिट. So this is known as the brain of a computer system. Now it is the electronic hardware device and that processes all the operations, arithmetic operations and logical operations of a computer. In other words, all the major calculations or operations or comparisons are performed inside the CPU, and it is also responsible for handling the several types of operations of several other units. So it has basically three main units, you can say: the control unit, arithmetic and logic unit, and central processing unit. तो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसका नाम ही है सेंट्रल. दूसरा वर्ड है प्रोसेसिंग और तीसरा जो है वो है यूनिट. अभी तक जो हमने इनपुट डिवाइस पढ़े या आउटपुट डिवाइस पढ़े, इसको आप देख सकते हो, है ना, एक्सटर्नली, जैसे कीबोर्ड को देख सकते हो या माउस को देख सकते हो या कोई भी पॉइंटिंग डिवाइस है, पेन है या जो भी चीजें हैं वो आप देख सकते हो. आउटपुट डिवाइस को भी आप देख सकते हो, डिस्प्ले यूनिट है या प्रिंटर है या प्रोजेक्टर है या कोई और यूनिट है, उसको आप देख सकते हो. लेकिन जो सीपीयू है वो इनबिल्ट होता है कंप्यूटर के अंदर, जो कि ये सारे प्रोसेसिंग को करता है. जो इनपुट से आप दे रहे हैं, आउटपुट से जो आप ले रहे हैं, तो वो सारा चीजें कहाँ हो रही हैं, उस मेन सर्किट का नाम है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ये एक मदरबोर्ड जिसे कहते हैं, उसका एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट है, एक इम्पॉर्टेंट सर्किटरी यूनिट है सीपीयू. अब सीपीयू में 3 यूनिट्स होते हैं: कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. मतलब ये इसी में है. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं, यहाँ पे मेमोरी आना चाहिए. मेमोरी होती है. 3 पार्ट होते हैं: कंट्रोल यूनिट, मतलब कि सीयू, एएलयू और मेमोरी. तो देख लेते हैं कंट्रोल यूनिट क्या होता है. Now, as the name suggests, the control unit of a CPU controls all the activities and operations of a computer. It is also responsible for controlling the input device function, output functions, memory, and other devices which are connected to the CPU. All the memory units, all the registers, and the control unit acts like a supervisor. The control unit, it controls the operation, so which determines the sequence in which the computer programs and how the instructions are processed and executed. So that's why this unit is called control unit. तो control unit क्या कर रहा है? control unit control करता है आपके input, आपके output operations को, input operations को और processing को, memory को. और ये एक तरह से सुपरवाइजर है सबका, है ना. देखता है कि कहाँ क्या काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ से डेटा लिया जा सकता है, कहाँ से इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं, कहाँ पे स्टोर हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है. तो इस तरह से कंट्रोल करता है ये सारे ऑपरेशन को, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनपुट विच यू आर गिविंग एंड देन प्रोसेसिंग, है ना, एग्जीक्यूशन एंड देन आउटपुट. तो सारी चीजों को कंट्रोल करने का ये यूनिट है. फिर है एएलयू. एएलयू इज अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसमें की सारी चीजें होती हैं. Because the data inputted through some input device, it is stored in some unit of memory, that is we call primary storage unit. Then the arithmetic logic operation performs these operations, arithmetic operations and logical operations. Arithmetic का मतलब होता है is related to mathematics, addition, subtraction, division, multiplication. Because all your computer is based on, they are digitally operated, okay, numbers पे ऑपरेट करता है आपका सिस्टम. अब इसमें कहाँ एडिशन होना है, सब्सट्रैक्शन होना है, डिवीजन होना है, ये सारी चीजें इंस्ट्रक्शंस को लेके होती हैं. वेदर दिस what type of addition, which instructions to be added, which instructions not required, they had to be deleted, मतलब not deleted but not required, so they can remove. And then division and multiplication in some or the other way. And logical operations means something is added or something
whether this is equal to this or greater than or less than. So all these type of operations are logical operations. We are not going into much detail, just you have to understand about the arithmetic, the word arithmetic and the word logic. लॉजिक और अरिथमेटिक का क्या मतलब होता है? अरिथमेटिक का मतलब है कि कुछ कंट्रोल ऑपरेशंस होते हैं, सिंपल ऑपरेशंस होते हैं जो हमें मैथमेटिक्स में पता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। और दूसरे तरह से लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं, एंड और इक्वल, ग्रेटर देन, मतलब ये दिस नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन, दिस नंबर और दिस नंबर एंड दिस नंबर। तो ये सारे लॉजिकल ऑपरेशन में आते हैं। अब ये किस तरह से उसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या यूज होता है, क्या वो करते हैं, ये इंटरनली डिपेंड करता है आप किस तरह का इनपुट दे रहे हैं, किस तरह की प्रोसेसिंग कंप्यूटर को करना है और किस तरह का आउटपुट आप चाह रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस, इन ऑल एवरेज इंस्ट्रक्शंस जो हैं ऑलरेडी उसमें इंस्टॉल होते हैं। कुछ आप अपनी तरफ से ऐड कर लेते हो, कुछ आपको ऑपरेशन चाहिए तो आप कहीं से सॉफ्टवेयर लेते हो, कुछ और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लेते हो और इंस्टॉल करते हो क्योंकि वो आपको चाहिए। लेकिन ये सारी चीज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आपकी नीड के हिसाब से कंप्यूटर लेता है और मेमोरी यूनिट से, और उसके बाद में प्रोसेस करता है। फिर वो मेमोरी यूनिट में जाके थोड़ा टाइम स्टोर होता है और फिर वो आपको बाहर डिस्प्ले पे या जो भी फॉर्म में आप चाहते हो आउटपुट, वो आपको मिलता है। So logic units are also responsible for performing several other operations like comparing, selecting, matching and merging data. Logic का मतलब ही यही होता है कि this and this or this और this का मतलब क्या है कि you have selecting this. Okay, greater than, less than का मतलब है you are comparing the set of instructions. Merging the data means this and this and this and that. So you merge all the information. Then there is a memory unit. Now memory unit is again an essential part of the computer system, which is used to, memory का मतलब ही है we store the data and instructions before and after processing. So memory unit is a very, very important part, and it is considered three things you always consider when you purchase some system or gadget, whether it is your computer system or mobile system or your vehicle. So one of them is your display unit and memory unit, and now in case of mobile it's a picture, how the pixel size. So all these 3-4 things are very, very important. How much storage capacity a gadget is having. So that's why it is a very essential part of any system, especially computer system, which is used to store data and instructions before and after processing. Now the memory unit transmits the information to other units of the computer system when required. So computer memory refers to different type of data storage technologies used by the computer, because in computer there are several types of memory, and this is one of the important topic in ICT for you. You remember this when we discuss about the computer memory. So it is an electronic device, or you can say a chip, that holds a place for instructions and data that computer needs to reach quickly, because there are some set of instruction for the working of the processor already installed by the manufacturer and stored in one place, that is the memory part. And also when you process the data, you also want to store that data within the computer system. This is a different type of memory. So likewise, it's a collection of a storage unit that stores the binary information in bits, and this splits into smaller components which we call cells and the registers. So and each cell has a unique address for storing the data in the memory, because and this address is also in digital form, in a numeric form. So as you type something, they the processor needs some set of instructions. So according to the the input,
this control unit or your CPU want some instructions set of program from the memory to process your data. So all these things are stored permanently or somewhere in permanent, somewhere when during the process in temporary storage, that is also a part of memory. So let's see one by one. So in all, if you classify the computer memory, it is basically of two types, primary memory and secondary memory. Now, primary memory is internal memory. Now, remember this. And this is, you can say, the main memory of your computer system. And secondary memory is external to the computer, all right, which you can replace or you can, add within the computer or externally also. So primary memory and secondary memory. And primary memory, there are again two types. This is again a very important topic. I am saying it. This primary memory or the internal memory are of again two types, RAM and ROM. RAM stands for random access memory and ROM stands for read-only memory. Now then RAM is again SRAM and DRAM. S is static and D for dynamic. SRAM and DRAM. Now ROM is three types, PROM, EPROM and EEPROM. P stands read-only memory, ROM, that is ROM, that is read-only memory. And this PROM, that is the programmable ROM. And EPROM is erasable programmable read-only memory. You can erase that program and then you can rewrite or some, because this is inbuilt memory. Now remember one thing, this primary memory which contains RAM and ROM, this is internal to your system, right? The manufacturer also fix some places for these two circuits, the two chips, RAM and ROM, and all the programs or all the some set of instructions are already stored in it. You cannot change it. So that is RAM. Sorry, ROM. And RAM also. RAM is a part of a small memory which access when the your CPU functions, then it stores the instructions from the ROM and store temporarily in RAM. So all those instructions in RAM and ROM, they are uh, already stored in your device, or it is inbuilt memory, you can say. That's why it is called internal memory. Now the third one is EEPROM, that is electrically erasable programmable read-only memory. So these are primary memories. And then secondary memories, they are of three types: magnetic storage, optical storage, and flash storage, depending upon how the the information is stored in the device or in the chip. So depending upon they are named. Magnetic storage, magnetically some magnetic material was there, and then it is stored in it. So this is of the three types: HDD, floppy disk, and magnetic tape. So HDD, it is hard disk drive. Floppy disk, earlier days in 19s, they uh, the you can say user uses this type of disk. They are externally, okay, externally they are used. They can there are some slots in the you can say the desktop. You can insert this floppy disk and you can store some data, or the stored data you can use for the further functioning of your programs. And then magnetic tape was also there. Then optical storage, where the here the magnetic material is used in magnetic storage. Optical storage, light is used, basically the laser lights. So there are CD and DVDs, the compact disc and digital visual displays. So this is another form of storage devices. Then there are flash storage, pen drives and memory cards, which we
still we use these two types of memory storage devices. So let's see one by one. So broadly, the memory is separated into जो अभी तक हमने पढ़ा, ये जो मैंने क्लासिफिकेशन आपको ये जो बताया फ्लो चार्ट टाइप, ये तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। जो ट्री हमने ये वाला दिया, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है इसको समझना, नाम ही देखना है आपको। ये देखिए प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो है वो मेमोरीज हैं जो कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड में ऑलरेडी होती हैं, सीपीयू के अंदर, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरीज वो हैं जो कि नाम से पता चल रहा है एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल मतलब कि जो मदरबोर्ड है उसके बाहर की जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, कुछ को आप एक्सटर्नली कनेक्ट कर सकते हो, है ना। जैसे हार्ड डिस्क है तो वो भी लोग कुछ एक्स्ट्रा स्टोरेज आपको चाहिए तो वो चिप आप ले करके और अलग से भी यदि वहाँ पे मदरबोर्ड पे जगह है तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो। लेकिन जो फ्लॉपी डिस्क है या जो सीडीज हैं ये एक्सटर्नली पहले जो है वो सॉकेट जो है इसके लिए एक ड्राइव्स बनाते थे अंदर फ्लॉपी डिस्क के हिसाब से, उसका साइज और शेप के हिसाब से, तो यू कैन इंसर्ट इट और आप अपने फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स को यदि कुछ इंस्ट्रक्शंस है उसको यूज कर सकते थे उसमें, और वहाँ का जो डेटा है वो आउटपुट जो भी है, जो भी आपको चाहिए वहाँ से कंप्यूटर से उसमें डाउनलोड करके आप उसको सेव भी कर सकते थे। लेकिन इनकी जो कैपेसिटी है ये कम होती थी, बहुत ही कम। 90s में ये सब यूज होते थे। उसके बाद सीडीज का जमाना आया, कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसमें कि सिर्फ टेक्स्ट को लिखा भी जाता है और वीडियो के फॉर्म में भी डीवीडीज बनी उसके बाद में, जो कि थोड़ी सी कैपेसिटी उनकी ऑब्वियसली, क्योंकि ज़्यादा इंफॉर्मेशन है वीडियो में, ऑडियो भी आता है, वीडियो भी आ सकता है, तो इनकी जो कैपेसिटी है, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी है, वो फिर ज़्यादा होने लगी। फ्लैश मेमोरीज में पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड्स आते हैं जो अभी भी हम यूज़ करते हैं। ये डिजिटल कैमरे में भी यूज़ होता है, आपके मोबाइल में भी यूज़ होता है और हमारा कंप्यूटर्स में भी यूज़ होता है। तो प्राइमरी सेकेंडरी जो है ये मेन मेमोरी है, इसके बीच में ये कैश और रजिस्टर्स भी आते हैं, तो उसको भी हम देख लेंगे कि प्राइमरी मेमोरी जो है दिस इज कॉल्ड द मेन मेमोरी and it is internal memory, primary storage, because all the types of computer memories are directly accessed by the processor, and that's why they are primary memories, because they allow the processor to access the store running programs and currently process data that are stored in the memory location. So the use of this memories is mandatory in all the systems using microprocessors, including the computers. For example, we have seen RAM and ROM. These are the two store programs or memories. So these memories are limited in capacity. They are not having a very, large capacity. And manufacturer, by using this ICs or semiconductor devices, they put into your motherboard, into your CPU. So its speed of data accessing is faster than the secondary memory, because they are required, for processing the data. As fast these memories are, the fast your CPU, the fastest your system. And that makes it, the cost effective thing is this RAM and ROM. So, but their capacity is not much, because they are internally inbuilt and programmed by the manufacturer itself. But they are very, very expensive as compared to secondary memory. They are faster, they are expensive, but their storage capacity is less as compared to secondary memories. Now, RAM is random access memory, and it is on the motherboard of the computer, where your CPU was, you can say, fabricated or put in a particular circuitry.
And the you can say the location of this memory is it is near to your CPU, and the computer temporarily stores its data, its set of instructions during the work. Now, whenever your computer is working, so it needs some set of instructions from ROM to, for the regular functioning of uh, the computer, or you can say processing of the data. So some instructions from the ROM, it is temporarily stored in RAM. So this is also, a volatile memory. Memory means what? If you shut down your computer or switch off your computer, or somehow if electricity is gone for a while, then in that case, all the stored set of instruction in RAM will be vanished. वो remove हो जाते हैं, which means that the contents of the memory can be erased when electricity is removed from it. When you switch off your computer or electricity is gone by some means, then the memory is empty in that case. But you can both read and write to RAM. Now, DRAM is dynamic RAM, that is the dynamic random access memory, and it is used for dynamic data storage. And this is consists of 1 bit information. Now, very much detail is not required. Just remember this is composed of a transistor and a capacitor. Capacitor means it holds the information for some time. So these capacitor and transistor are extremely small in size, and capacitor needs to continuous refresh to retain the information, since it is a volatile. So the capacitor stores this information for some longer duration. So that's why, because every time this information is required by the CPU to process the data, so there should be, for some time, this information should be, or set of instructions or program should be there in the RAM. So because it should not volatile, it should not, you can say, removed in between the processing of the data. And then there is a static RAM, that is a static random access memory. So this is again a memory which is active until the power supply. So this chip of RAM, this SRAM, holds less data as compared to DRAM. And it is not having any capacitor, so it cannot hold this information too long. So it doesn't require any refreshment, because so that's why it is called static. This is a difference. I don't think it is much required, because this is a very somewhat in a deeper sense, how many resistors and how many transistor is required. It's some technical term. You just note down about the primary memory, secondary memory, which one is fastest, which one is volatile, which is non-volatile form of memory. All those. Suddenly disconnected. Ma'am, are you there? मैम का कॉल कट गया है. Oh, yeah. Suddenly disconnected. Hari Om. From where Hariom. I left the meeting? मैम लास्ट पेज. Last. Okay.
So, okay, I think this much is enough for today. Yes, ma'am. Yeah.